Okay, hi everyone. Very good afternoon and welcome back to CGB Mentors. So let's do the news analysis for 14th June, right? And we have certain news articles today with a lot of concepts, that, right? So the first article that you have is gold crude spikes while rupee stocks sink as tensions rise in West Asia, right? So over here, what is happening? The developments which has happened in the West Asia, you all know, right? तो ईरान ने इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है एंड ड्यूरिंग दिस सिचुएशन ऑब्वियसली पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन दी सेफर एसेट्स. ठीक है, हम सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू रिमेन इन्वेस्टेड इन बैंक्स, मेटल्स एंड द स्टॉक्स लाइक दैट. ठीक है, वहां पर हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहते हैं एंड दैट इज वाई यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, right? Somewhere around 1600 rupees per gram, that has been the change in the gold prices. It has spiked by 2%, crossed 1 lakh mark on the derivative segment as well. ठीक है, so that is something in relation to gold. Apart from that, or we all know that why the crude oil has spiked up, right? अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, so 90% of our crude oil requirements, 50% of our LNG, natural gas related requirements, they are fulfilled by the West Asia. ठीक है, West Asia से आता है 90% of our crude oil, 50% of the natural gas that we require. So obviously अगर उस एरिया में किसी भी तरीके का टेंशन बढ़ेगा या फाइट्स होंगी, so it is going to impact the pricing in India and the inflation is going to rise up. Now in this article itself, I'll tell you one more thing which is linked. Now what is that? Hear me out very carefully. See, crude oil is required for practically every segment in India, right? हर जगह जरूरी है. तो इवन इफ अगर मैं सिंपल से सिंपल वेजिटेबल्स के बारे में भी बात करूं, तो अगर हमें वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्ट करनी है तब भी वी नीड द पेट्रोल और डीजल, right? So if there would be high prices in petrol and diesel, our commodities are also going to be inflated, right? So we'll see inflation, and this inflation is not because in India we are doing good production. ये इंडिया के बारे में नहीं है कि हम अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं. This inflation is called as imported inflation. हमारे देश के बाहर इस तरीके की situations हैं, because of that prices of the inputs have increased and that is culminating to rising output prices. ठीक है, और जब ये होता है तो आप देखेंगे इसका एक और इम्पैक्ट क्या हुआ. जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड बढ़ गई 6.28% से 6.30. Why? यील्ड कब बढ़ती है आप बताएंगे? जब प्राइसेस गिरती हैं. पीपल आर नॉट डिमांडिंग बॉन्ड्स, राइट? why is that the situation? Reason being, people want to keep liquidity with themselves or want to invest in the safer assets because they know कि आगे चलकर अगर इन्फ्लेशन और बढ़ेगा तो जो पैसा अगर 5 रुपए गवर्नमेंट बॉन्ड में हमारे हाथ पे आ रहा है, that does not have much value for us left. ठीक है, उसके लिए हमारे पास में ज्यादा वैल्यू होगी नहीं. So this is the whole article, that if there are tensions in West Asia that has led to gold prices increase, that had led to crude oil prices increase, that is going to increase the inflation for sure, and that increase in inflation is obviously not good for us, right? Yes. See, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड पे बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, लाइक द न्यूट्रल स्टांस वन डे वी डिस्कस, एंड राइट नाउ देयर हैज बीन वेरी माइन्यूट इंक्रीज. अब इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट व्हाई इट हैज इंक्रीज्ड, आई हैव टोल्ड यू द रीजन. बिकॉज people are expecting, investors are expecting that going forward inflation is going to rise. और जब inflation बहुत बढ़ता है ना, तो आपके पास जो पैसा आ रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, right? So that is one of the reasons. This is how we are going to link each and every thing. Now moving forward to the next article that we have is, despite standalone losses, 24 listed firms propose to pay dividend for financial year 25. Now ये कुछ थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा. Listed firms, whatever profits that they earn, they have the priority. First of all, they'll pay all the outside expenses, right? उसके बाद में they'll pay debenture interest, then they'll pay taxes to the government,
आफ्टर दैट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और उसके बाद कुछ भी बचता है दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट एज अ डिविडेंड टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ द कॉमन सेंस सेज कि अगर फायदा कमाया है या प्रॉफिट आया है तब बांटो, बिना प्रॉफिट के आप कैसे डिविडेंड बांट सकते हैं। बट इन द कंपनीज एक्ट दिस इज अलाउड, राइट, आपको अलाउ किया जाता है दैट इवन इफ यू आर इन लॉसेस यू कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ठीक है। इस केस में वी विल सी जस्ट योर लॉस, नॉट द ग्रुप लॉस। ग्रुप लॉस का मतलब जैसे टाटा ग्रुप ऑफ एंटिटीज हैं, इफ सपोज टीसीएस इज इन लॉसेस, राइट, सो वी विल सी ओनली द लॉसेस ऑफ टीसीएस, नॉट द टाटा ग्रुप एज अ होल, राइट। तो आपका स्टैंड अलोन लॉस कितना है, एंड वी विल ऑल्सो सी दैट यू शुड डिक्लेयर दिस डिविडेंड आउट ऑफ योर फ्री रिजर्व। जो आपने पिछले सालों में जो पैसा बचाया है ना ओवर द इयर्स, बाय पुटिंग दैट इन योर रिजर्व्स, you can distribute dividend out of that, right? So this is what I wanted to tell you, that even in the case of losses they are distributing dividend because it is important to give the right signals to the investor. अगर मान लीजिए आप नहीं डिक्लेयर करोगे, आपके पास लॉसेस भी हैं, तो इन्वेस्टर्स वुड थिंक दैट दिस कंपनी इज गिविंग अस नथिंग, ठीक है, कुछ दे ही नहीं रही है, ना तो इनके शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ना ये डिविडेंड दे रहे हैं, राइट, एंड दिस इज अ टोटल लॉस इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इन फर्दर, ठीक है। लोग बेचना शुरू कर देंगे शेयर, शेयर के प्राइसेस कम हो जाएंगे और मार्केट कैप कम हो जाएगा। सो टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन companies do declare the dividends even if they are in losses, right? Next we have TVS Capital brings in 3 new independent directors. तो अभी independent directors का क्या concept है? See, a company is run through investors' money. Not all shareholders are there on the board of directors. ठीक है, सिर्फ majority shareholders ही होते हैं, राइट। बाकी के शेयर होल्डर्स बेचारे अपने घर पे हैं, आराम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि कंपनी क्या कर रही है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, डिबेंचर होल्डर्स एज वेल एज द बैंक्स हु हैव गिवन द लोन टू द कंपनी, दे आल्सो हैव दैट राइट दैट कंपनी शुड बी रन इन प्रॉपर सेंस। तो अब इसके लिए कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दैट मीन्स यू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 15 पीपल हु आर रनिंग योर कंपनी, राइट। Now, out of these 15 people, we want कि कम से कम 1/3 जो है, मिनिमम 1/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? These directors, they do not have any financial or commercial relationship with the company. Neither their relatives have such kind of company. They are not in receipt of remuneration. They just receive the sitting fees. Suppose मैं आपकी कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मैं आऊंगी, आपकी मीटिंग अटेंड करूंगी, I will see that whether all the decisions are in the best interest of the investors or not, because I am there to protect the interest of the minority shareholders, people who do not have so much high shareholding in your company. जिनके पास में इतना पैसा नहीं है फिर भी उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, तो उनके भी तो राइट्स की कोई रक्षा करने वाला होना चाहिए ना। This is what independent director does, and it's really a good concept to understand. Now, next thing is we have Foxconn sends 97% of India's iPhone exports to the US as Apple tackles the Trump tariff. Now, Mr. Trump has imposed tariffs on China, right? So whatever Chinese tech products would be imported in US, they'll face the higher tariff requirements, right? इनको जो है टैक्सेस ज्यादा देने पड़ेंगे। तो फॉक्सकॉन क्या कर रहा है, पिछले 6-7 महीने में जितने भी आईफोन्स इंडिया में बने हैं, right, whatever iPhones have been manufactured in India, 97% of those have been exported to the US through chartered flights, ठीक है। सारे के सारे मेजॉरिटी हम क्या कर रहे हैं, चाइना में, यूएस में ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Earlier the percentage was somewhere around 50%, but since this tariff war has started, after that majority of our production is going to America. Now what it entails for us और इसका क्या फायदा है हमारे लिए? Number 1 is it establishes us as a major production center for Apple, right? Obviously एक आर्टिकल में हमने पहले भी डिस्कस किया था that Apple is now shifting its production base slowly and steadily to India,
right? And because of this measure, obviously going forward जो Apple का production base है वो India में बढ़ेगा, we'll do more export, and this is obviously good for our export earning also. One more thing which is what you can say, you can understand that it has been a major development. आप चेन्नई एयरपोर्ट पे जो कस्टम क्लियरिंग होती है, एप्पल हैज डन द लॉबिंग ओवर देयर एंड फ्रॉम 30 आवर्स द कस्टम क्लियरेंस हैज just reduced to 6 hours for the Apple exports, right? तो कहाँ 30 घंटे लगते हैं, कहाँ 6 घंटे लगते हैं. So if this could be done for a company, this could be done entirely for other things as well, or other exports also. That would make us so much efficient and can increase our export earnings, right? So that was one thing. Now next is FIIs taking short positions on index derivatives hint at cautious approach. Now over here what is happening is, see, FIIs, they are having right now the bearish attitude. Bearish attitude means they do not expect that the prices are going to rise in future, right? They expect that the prices are going to fall. अब अगर prices गिरने ही वाली हैं, so what they are trying to do, they are not interested in having the long positions. They don't want the right to buy. ठीक है, उनको right to buy अब नहीं चाहिए. Why they don't want the right to buy? Because they right to buy आप कब लेते हैं? They expect that in future the prices are going to fall, so we can gain by having a right to sell. So here there is a term which is used called as put long. Put long का मतलब क्या होता है? Buying the right to sell. राइट टू सेल को परचेज करना. कॉल शॉर्ट, कॉल शॉर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? दे आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द राइट टू बाय. दे डोंट वांट टू कीप द राइट टू बाय, they just want to have or want to buy the right to sell, correct? So over here, so that they can increase at a higher prices. So this is what the FIIs are interested on. They are taking short positions on the index derivatives. That means they are more interested in selling, right, and saving themselves for any further losses. So this hints at cautious approach taken by the FIIs. And obviously moving forward, as the West Asia situation unfolds, we are still unclear what the future holds for us, right? So next thing is India poised to become AI office of the world, cognizance Rajesh Warrior. So over here, what you can use, first of all, this particular statement in itself is very, very important, right? Number two, the IT industry of India, it is having a size of $250 billion right now. And there is a very important data given in this article that every Fortune 2000 company, they, what you can say, have an agreement with the Indian IT firms to manage their processes. So that means we are developing a outsourcing hub. In the last 20 years, we have done tremendous progress in the tech as well as the IT front. Now, what AI comes with, if you see the major companies, for example, Cognizant, Infosys, Wipro, they are training their employees with the AI, right? So what is the need of the hour is upskilling and the cross-skilling. People are getting fired obviously, but the reason is not just AI. AI अकेला reason नहीं है. If you'll ever write in your exams, AI is not just the reason. Sometimes the product strategy change is also the reason. Sometimes the skills, when they become redundant, is also a reason. ठीक है? People don't update themselves from time to time, and that's the major problem. If there is a major change coming right in front of you, you have to take up the opportunity. आपको AI में developments सीखने पड़ेंगे. You have to be ahead than the trend to remain the skillful employee that our economy needs. Right? So this was all that I wanted to discuss. I wanted to make the concept simple for you. I don't usually go for numbers until and unless it's very important for you to remember. So whatever numbers you see in the background, just try to ignore them until and unless I tell you to remember it or I mention it while I am speaking. Right? So this is what we had to discuss today. Thank you so much for joining in, and I hope you would have understood something out of it. If you did, then please do not forget to like this video.